banded together. For more than a year now, we've all been busy navigating a new era of virtual events due to the pandemic restrictions. It gives me immense pleasure to welcome you all to our 62nd Founders Day celebration. On behalf of the entire ARSD family, I would like to extend a very warm welcome to all our guests, members of teaching and non-teaching fraternity, respected seniors who have retired from our college, our alumni, and dear students. Founders Day is an important day in the college calendar, the day we meet to commemorate and pay our homage to all those visionaries who founded this college. We begin today's auspicious occasion with an invocation to the goddess of learning, Ma Saraswati. हे हे सरस्वती शारदा, हे सरस्वती शारदा, हे सरस्वती शारदा, हे सरस्वती शारदा, हे सरस्वती शारदा। सांस्कृतिक कला श्री शोभिनी, सांस्कृतिक कला श्री शोभिनी, साहित्य ज्योति विमोहिनी, सुर उर मधुर मृदु गीत के, सुर उर मधुर मृदु गीत के, गीत अमित नव झनकार दे, हे सरस्वती शारदा, हे सरस्वती शारदा, हे सरस्वती शारदा, हे सरस्वती शारदा, हे सरस्वती शारदा। कुंदेन्दु तंत्रातरल, कुंदेन्दु तंत्रातरल, अरुणेन्दु मन निश्चल सरल, नीलेन्दु वसना भारती, नीलेन्दु वसना भारती, पीतेन्दु प्रभु विस्तार दे, हे सरस्वती शारदा, हे सरस्वती शारदा, हे सरस्वती शारदा, हे सरस्वती शारदा, हे सरस्वती शारदा। Thank you, Sai Samita, for that very soulful rendition. Our motto being Tejasvi Navadhita Mastu, meaning, may our learning be endowed with radiance. Our honest endeavor is to maintain academic excellence by vigor, by way of adopting best academic practices. Since its very inception, in addition to the pursuit of academic and professional excellence, the Sanatan Dharma College put emphasis on character building and idealism, informed by the Sanatani values. The college was founded in August 1959 by the Sanatan Dharma Sabha. Started in Anand Parbat, the college shifted to the present location in Dhaulakua in the year 1965. In March 1966, Shri C.L. Suri took over as the principal of the college, and the current principal, Professor Gyantosh Kumar Jha, took charge in November 2013. I remember Pandit Jawaharlal Nehru's words, fit for the occasion. We should never measure time by the number of years, but by what one feels and what one has achieved. Unquote. Our ultimate mission at ARSD is to create conscientious,
and forward-looking, competent individuals with moral ideals. There is a perfect blend of the traditional as well as the contemporary ways and means for the comprehensive development of the student's personality so that the society at large is benefited with the well-equipped persons who can significantly contribute to the value creation process. The college takes pride in its past achievements and looks to the future with great hope and determination, committed to a model of quality education that is equitable and leads to the holistic development of all the stakeholders. It's time now to introduce our esteemed guests for today's function. We are extremely honored to have as the chief guest for today's function one of India's most successful sport shooter who specializes in trap shooting, Mr. Manavjit Singh Sandhu. He has an incredible list of achievements to his name. He is a Rajiv Gandhi Khel Ratna Awardee 2006 and Arjuna Awardee 1998. He is a four-time Olympian, having represented India at the Athens 2004 Summer Olympics, Beijing 2008 Summer Olympics, the London 2012 Summer Olympics, and the Rio 2016 Summer Olympics. He is the former world #1 trap shooter. He won gold medal at the 2006 ISSF World Shooting Championship, becoming the first Indian shotgun shooter to be crowned world champion. He is a recipient of 4 silver medals at the 1998, 2002, and 2006 Asian Games. His career in shooting started early, and his interest developed mainly due to his father, Gurbir Singh Sandhu, who is also an Olympian and Arjuna Awardee. Mr. Manavjit Singh Sandhu continued his impressive performance, and in 2014, he won gold medal at the World Cup Tucson, US. He holds the Asian record of 124 out of 125 targets. We are extremely grateful to you, sir, for accepting our invitation. We welcome you. Thank you. I also extend a very warm welcome to Professor Prem Lal Unyal, Treasurer, College Governing Body. Sir has kindly agreed to preside over today's function. Professor Unyal is in the Department of Botany, University of Delhi. His research interests include bryophytes and gymnosperms. He has supervised several MPhil and PhD students during his career. He has several research publications, popular scientific articles, and research projects to his credit. He is associated with a number of professional bodies. We are extremely honored by your gracious presence, sir. We welcome you. It gives me immense pleasure to welcome Shri Pavan Jaggi, sir, former chairman of the college. Shri Jaggi has created a distinctive identity for himself and is well known for his philanthropic work. His belief in placing human values uppermost and upholding them in personal and social everyday life is commendable. He took keen interest in the development and rise of the college to this level with his ever helpful and ever supportive approach. We are all well aware of his immense contribution in building this college into an institution of great eminence. We welcome you, sir. We also have amidst us Mr. J.S. Arya, President, Alumni Association. Mr. Arya qualified the 1985 Civil Services exam and joined the 1986 batch in the Indian Defense Account Service. He served in various capacities in the government and also did a stint with the Indian military contingent, the UN mission in Somalia, during which he officially wore the uniform of a lieutenant colonel and was recipient of the UNOSOM medal from the UN. He also served as Deputy Director General of
meteorology, Mr. Arya is now a practicing lawyer in Delhi High Court. We welcome you, sir. I'd like to introduce our next guest with a quote by C.S. Lewis. I quote, "You are never too old to set another goal or dream a new dream." With these words, I welcome Colonel Ravinder Singh Tokus, who is also an alumnus of ARSD College, and he's also the Vice President of Alumni Association. Colonel Tokus is a busy person whose aim is to improve people's lives by helping with social and interpersonal difficulties, promoting human rights and well-being. We welcome you, sir. We also have amongst us Professor Gyantosh Kumar Jha, principal of our college, who has always been a continuous source of inspiration and support in all our endeavors. Under his dynamic leadership, the college has grown into a vibrant and one of the leading colleges, as reflected by in the NIRF rankings. He is passionate about promoting active learning and helping students build successful careers. The college has grown tremendously over the years under his able guidance and unstinted support and dedication. Thank you, sir, for your constant guidance and support. Going down the memory lane, we have prepared a short video showcasing the historical journey of our college. I request my colleague, Mr. Ravinder Pant, to give us a glimpse of the wonderful journey that our college has traversed over the years. The important milestones of the college. The college was established in the year 1959. The first college magazine, Udyachal, was published in the year 1959. Beginning of NCC in the college in the year 1961 with the first batch of 35 cadets. In 1968, college was renamed as Atmaram Snatandharm College. Law Center 2 began to share ARSD College's building in the year 1972. Three-day cultural festival Tide was held in college premises for the first time in the academic session 1992-93. MA courses in Hindi, English, and political science started in 1996. Inauguration of the college website in 1999. Dramatic Society Rangayan was founded in the year 2003-2004 on the occasion of the Founders' Day.
College organized an inter-college street play competition for the first time in the year 2006-7. In 2008, placement cell and equal opportunity cell were established in the college. The first alumni meet was held on 16th March 2009. Separate commerce block in the year 2010. The Women Development Cell of the college was constituted in the year 2013. March 2013, Shri Pavan Jaggiji took over charge as the college governing body chairman. In November 2013, Professor Gyantosh Kumar Jha joins his duties as the permanent principal. In 2013, the Dramatic Society of the college, Rangayan, initiated its 3-day theatre festival titled Rangshish Jaydev Natya Samaroh, one of its kind in the University of Delhi. In 2013, alumnus Rajkumar Rao got awarded the National Film Award for the Best Actor for his lead role in the biopic Shahid. In 2013, college established a business incubation center through an MOU with MSME, Government of India. College was awarded the Star College funding under the scheme launched by the Department of Biotechnology, Government of India in the year 2014-15. The Dramatic Society Rangayan celebrated its 10th year in the year 2014-15. A new teaching block constructed on the 3rd floor of the college, an atrium with a capacity of 500 students, students' union room, medical room were made operational, complete campus coverage by the CCTV, sports facilities enhanced like the badminton court, table tennis pool, volleyball court, and many more. College library was digitized. A new block over the canteen was constructed in the year 2014-15. The first NAC accreditation with 3.11 CGPA was in 2016. College was ranked 5th in India under the National Institution Ranking Framework, NIRF, announced by MHRD, now the Ministry of Education, Government of India in the year 2017. 2 new college societies, Enactors and Pixelation, were formed in 2017. In 2017 again, college was awarded the World Best Managed College by the International Association of Educators. College was also awarded the Girl Child Education and Empowerment Award in the same year 2017 and the Green Campus Award also. College was ranked 14th in India in NIRF rankings in the year 2018. Inauguration of a physics and chemistry lab on the 2nd floor of the building in the year 2018. College website was upgraded to the current version with excellent design and layout, user-friendly navigation. It was developed in-house using open source technology WordPress in the year 2018. First job and internship fair was organized by the college on 12th March 2019. College was awarded the Green Audit in the year 2019 and declared as an environmental friendly institution. College was ranked 14th in India in the NIRF rankings in the year 2019, and on the occasion of the 97th Foundation Day of Delhi University, our college was awarded the Best Website Award in the year 2019. College celebrated its Diamond Jubilee year in 2019. Our college got the certificate of recognition in the same year, that is 2019, by the National AIDS Control Organization, Government of India, for our contribution in engaging and mobilizing youth to prevent and control HIV/AIDS for the National AIDS Control Program. Our college was ranked 13th in India in the college category in the NIRF rankings 2020, released by the Ministry of
education. In 2020-21, the in-house interdisciplinary innovation and research projects initiated, MOU with NSUT and the National Productivity Council was signed. And the National Productivity Council is a department of is under the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Various MOUs were implemented for the add-on courses. Vidya Vistar scheme was initiated under the guidance of the University of Delhi. ARSD selected as a network institute of IIRS ISRO outreach program, and the Unnat Bharat Abhiyan, a flagship program of the Government of India, was initiated by adopting 5 villages. Thank you. And now it gives me immense pleasure to announce the release of Student Handbook for the current session 21-22. The sole objective of this handbook is to help the freshers get all informations they would need while starting their college life. These informations will also be available on the college website in e-form. Treasurer Sir, Professor Premlal Unial ji, I seek your permission for the release of handbook. Yes, please. Please. Yes, please. Go ahead. Thank you, sir. May I invite Dr. Vinita Tuli, convener, Student Handbook Committee, to say a few words. Thank you, Dr. Rosie. Respected Chief Guest, Shri Manavjit Singh Sandhuji, distinguished guests, Professor Pradeep Kumar Burma, Chairman, College Governing Body, Professor Premlal Unial, Treasurer, College Governing Body, Shri Pavan Jaggi ji, former Chairman of the College and a Principal, Professor Gyantosh Kumar Jha. I, the convener of the Student Handbook 21-22, is privileged to release it. We come with the Student Handbook every year to give students an overview of the college and its general functioning. It provides general information and guidance to students and help them to make the most of the opportunities on offer at ARSD. It has important information regarding services, administrative policies, explanation of the rules, regulations, policies, and procedures. It also provides a glimpse of the college achievements to take pride in. It contains each and every information a student needs, ranging from departments, add-on courses, societies, creative writing opportunities, research projects, library, and other facilities of student support system. It is an important document for each student, especially the newcomers. प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने विद्यार्थियों के लिए हैंडबुक तैयार की है। इस हैंडबुक के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी कॉलेज के बारे में सभी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है। हैंडबुक से गुजरते हुए विद्यार्थी साल भर में कॉलेज द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रमों, कॉलेज की सभी समितियों की गतिविधियां, प्राप्त उपलब्धियों, छात्रों द्वारा पाए गए मुकामों तथा कॉलेज के बारे में एल्यूमिनाई छात्रों के अनुभवों को जान समझ सकता है। सभी विद्यार्थी अपने विभागों से अवगत हो सकते हैं। हैंडबुक विद्यार्थियों को कॉलेज के बारे में सभी जरूरी जानकारी और उपलब्धियों से रूबरू करवाता है। I would like to thank my entire team of Student Handbook 21-22 for their hard work and efforts. This would not have been possible. I would like to thank Dr. Priyanka Kulhari, Ms. Manisha Bagri, especially for their consistent efforts, and also my other committee members, Ms. Anupriya Arora, Mr. Manvendra Yadav,
Ms. Baljeet Kaur, Mr. Ravinder Pant, Dr. Amit Vishwakarma, and Dr. Abid Hussain. And in the end, I would thank Ms. K.R. Swati, our student of English Honours third year, for beautifully designing this handbook for us. Thank you. May I now invite our principal, Professor Gyantosh Kumar Jha, to share his thoughts with us. थैंक यू रोजी। आज के इस समारोह के हमारे मुख्य अतिथि श्री मानवजीत सिंह संधू जी, हमारे कॉलेज गवर्निंग बॉडी के ट्रेजरर प्रोफेसर प्रेमलाल मुनियाल जी, पूर्व में गवर्निंग बॉडी के हमारे अध्यक्ष रहे श्री पवन जग्गी जी, एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर जे.एस. आर्या, वाइस प्रेसिडेंट कर्नल टोकस, इस प्रोग्राम के कन्वीनर श्री अजीत कुमार और सभी सहयोगी साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, और आज हमारे जो सेवानिवृत्त साथी, जो रिटायर्ड कलीग्स जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका आपके ही कॉलेज की तरफ से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे खुशी है और गर्व है कि कॉलेज अपना 62वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब लोग एक इतिहास बनाने के लिए एकत्र हुए। आज का दिन याद करने का है उन लोगों को जिनकी सेवा, त्याग और तपस्या के कारण सनातन धर्म कॉलेज की स्थापना 1959 में हो सकी और जो 1968 में फिर आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज बना। मैं इस मंच के माध्यम से अपने कॉलेज के उन संस्थापक सदस्यों का उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और या उनके त्याग और उनकी तपस्या को याद करते हुए मैं सोचता हूं कि 1959 में कॉलेज बनाना कितना बड़ा और कठिन काम था। यदि उन लोगों के मन में समाज में शिक्षा की लौ को जगाने के लिए एक इस तरह की प्रेरणा नहीं होती तो ऐसा कॉलेज बनना संभव नहीं था। सनातन धर्म, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का जो उद्देश्य है, जिसमें सेवा की भावना की प्रमुखता है, और हम लोग 62 साल बीत गए और इन 62 वर्षों में कॉलेज ने जो सफर तय किया है, मैं समझता हूं कि हर वो एक व्यक्ति जो इस कॉलेज से जुड़ा रहा, इस सेवा, त्याग और तपस्या या साधना से इस कॉलेज से संलग्न रहा और इसीलिए ये कॉलेज आज इस मुकाम तक पहुंच सका है। मैं स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और मैं ऐसा सोचता हूं कि कोई भी संस्थान या संस्थाएं केवल इमारतों से नहीं बनती। संस्थाएं बनती है उनमें काम करने वाले लोगों या उनसे जुड़े हुए जीवंत लोगों से, जो अपनी आत्मा और अपने खून पसीने से, अपने हृदय से उस संस्था को सींचते रहते हैं, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। इसलिए पिछले 62 वर्षों में जो भी इस कॉलेज के साथ, चाहे वो गवर्निंग बॉडी के सदस्य के रूप में, उसके अध्यक्ष के रूप में, ट्रेजरर के रूप में, जो कॉलेज के शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी के रूप में इस कॉलेज से जुड़े रहे,
और जिन्होंने कॉलेज की सेवा की, शिक्षा का अलग जगाया और विद्यार्थियों को प्रेरित करते रहे, जिसके कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विद्यार्थी आज पहुंचने में कामयाब हो सके और ये कॉलेज इस जगह पर पहुंच सका। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं और उनको सादर प्रणाम करता हूं। मैं श्रेय देता हूं सारी सफलताओं का उस टीम को, जो टीम पिछले 8 वर्षों से मेरे पीछे लगी रहती है दिन रात, वो चाहे शिक्षक हो, शिक्षकेतर कर्मचारी हो और वो जुझारू विद्यार्थी हो। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले 1.5 वर्षों से कोरोना महामारी की विपदा से पूरा विश्व परेशान है और हम सब लोग उसको झेल रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग्स की सुविधाएं भी हैं, लेकिन कुछ इसकी सीमाएं भी हैं और उन सीमाओं में रहते हुए जो एक मिलने जुलने का और इस उत्सव को मनाने का जो आनंद हम कॉलेज में उठाते थे, आज हम उससे वंचित हैं। लेकिन इसके बावजूद वो जज्बा, वो जोश, वो हमारे दिल में इस कॉलेज के लिए जो भावना है, वो उसी तरह से विद्यमान और वर्तमान है। और आज इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो इस मीटिंग में हो या फेसबुक के जरिए हो या सोशल मीडिया के जिस भी रूप में इस माध्यम से जुड़े हुए हों, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उनकी निष्ठा इस कॉलेज के प्रति है। मैंने पिछले कुछ वर्षों से एक परंपरा की शुरुआत की, जो पहले ये परंपरा नहीं थी। मेरा ऐसा मानना है कि जो कॉलेज से शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी 30 साल से 40 साल 45 साल तक इस कॉलेज को अपनी सेवा देते हैं, वो केवल सेवा नहीं देते, वो केवल नौकरी नहीं करते, वो केवल तनख्वाह नहीं पाते हैं, वो अपना जीवन देते हैं। वो अपना बहुत सारा समय यहाँ व्यतीत करते हैं और जीवन देने में इस कॉलेज के एक एक चीज को जीते हैं। तो निश्चित रूप से हमने ये तय किया कि हर वर्ष वैसे अपने शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको हम सम्मानित करें। आज जो लोग सम्मानित हो रहे हैं, मैं उन लोगों का नाम लेना चाहूंगा। डॉक्टर KR सेठी, डॉक्टर दयानंद पराशर, श्री RM शर्मा, डॉक्टर LK शर्मा, डॉक्टर श्री RC रस्तोगी, डॉक्टर MM सूरी और 2 हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी श्री SC कृष्णानी और कमलेश शर्मा और श्री VK मिश्रा। मैं इन लोगों को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए और हमने जो सम्मान देना तय किया उसको स्वीकार करने के लिए उनका शुक्रिया करना चाहता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने सेवा काल में कॉलेज की जो सेवा की है उसको हम लोग निश्चित रूप से याद करते हैं। ARSD कॉलेज एक कॉलेज नहीं है, एक परिवार है। इसमें गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन से लेकर के एक विद्यार्थी तक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी सब लोग संयुक्त रूप से जुड़े होते हैं और संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं कि इस कॉलेज को, मैं तो ऐसा मानता हूं कि भारत का नंबर 1 कॉलेज बनाना है और यही मेरा सपना है और इसी सपने को जीते हुए मैं दिन रात लगा रहता हूं। आप सब लोग इसमें जुड़े रहिए और ऐसे ही हर वर्ष इस स्थापना वर्ष को सेलिब्रेट करते रहिए, उत्सव के रूप में मनाते रहिए। आप अपने कॉलेज के अनुभवों को जीते रहें, मैं ये शुभकामना देता हूं। पुनः हम सबको कॉलेज की स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धक शब्दों के लिए। And now I seek great pleasure in inviting our chief guest, Mr. Manavjeet Singh Sandhu, to address us. First of all, good morning and congratulations to all the faculty and students of the college. I'm very thankful to you for having invited me on this very special Founders Day celebration. Unfortunately, we have to do it on a digital platform, which is obviously never the same as being amongst all of you and to have a look at your campus and to have a feel of your college. However, this is the circumstances we live in and we must make the most of it. I have had
the privilege of listening for the last 15 minutes, the great achievements that the college and its founders and subsequently the people who look after it and who have been nurturing it have achieved. It is truly an eye-opener. One does not realize the vast history that goes behind educational institutes and the personal sacrifices that founders and principals and faculty make over the years. We are very fortunate that we still have people of such caliber in our country which take it forward. And I'd like once again to offer my heartiest congratulations to the college on its 62nd Founders Day. I also take this opportunity to drive home a point I often make about the importance of sports and education going together. It is of paramount importance to build the character of a student, because simple knowledge without the moral capability to apply it properly is of no use. And I feel modern times require moral courage and discipline like never before. So sports has the unique ability to teach somebody how to lose, how to get up and fight again, not necessarily always at the Olympic level, but even at the college level, the sense of ownership of a college, the sense of pride for participating in the college team, to fight for the colors, to fight for your fellow students. These are essential character building traits. And I would urge the college and the principal to apply as much focus as possible on their sports curriculum and to promote the sense of sportsmanship in their students. Further, you're well aware the Olympics are underway, and I would like this opportunity to request all the faculty and students to go all out to support our wonderful contingent, to give them all the support that they deserve. The Indian hockey team is now going to be vying for the bronze medal. The other team is still up with all the events to go. So all your support and prayers for the Indian contingent. And thank you very, very much for having me amongst all of you. Thank you, sir. Your presence and your encouraging words and the insights you provided would always be valued by all of us here. Thank you very much, sir. May I now request Colonel Ravinder Singh Tokus, Vice President, Alumni Association, to say a few words. Colonel Tokus. Founders Day of our college. I joined this college 46 years back when Mr. C.L. Suri was the principal. It is a great pleasure that all the students who studied in Atmaram, wherever they are doing their best, and in their growth, the contribution in the school and college is always there. I can just take this opportunity to say thanks to Manavjit ji, then the chairman, Professor Pradeep, then Jaggi ji, who has always supported the college in various activities as a chairman, and our teacher and professors. I was seeing M.L. Suri sir, who taught us economics. I still remember that all the professors and the teachers, they were treating like their family members to us when we were studying in 1975 to 78. We have fatherly figure, late Dr. Shastri, V.K. Agrawal ji, who were taught Hindi. We have Vikram Chopra ji, who taught us English, and M.L. Suri, Madam Premlata, Ranjan Kohli, and Anup Chatterjee, who taught us economics. So I am grateful to them that they gave us the opportunity to learn and stand on our feet. On this occasion, I wish everyone who is attending this Zoom meeting or by virtue of not able to attend it, that all the best, and wish Dr. Yantosh, who in last 10 to 12 years since then, he has taken as the principal. Our college is progressing, and I am sure we will keep doing our best in the future too. Thanks to everyone. Thank you, sir. Your involvement and interest towards the college is praiseworthy.
Next, I would like to invite Mr. J.S. Arya, President, Alumni Association, to share his thoughts with us. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Well, the Honorable Chief Guest, Shri Sandhu, Dr. Jha, Principal, and Dr. Unyal, Shri Pavan Jaggi, and all other dignitaries, all the professors, and most of all the youngsters who have joined in and are listening in. I would congratulate all of you on this 62nd Foundation Day. I came to the college in 1973, left in 1976 at a very young age. I was not even 19 when I graduated. And from then till now, I think I have the widest spectrum of having seen the college grow from 76 till today. And it has made tremendous progress. And there's a world of difference between what it was and what it is today. And it is great that all of you today are part of an institution of excellence, a star college. Now, over the years, the college has produced achievers in practically every field. We have people in the civil services, number of them. Today, the Honorable Raksha Mantri's PS is a Bihar cadre officer from our college. There are people in the IPS, there are people in IRS, economic service, everywhere. There are people in performing arts. If older colleges like Kirodimal had Amitabh Bachchan, we have Rajkumar Rao, a national award-winning lecturer. So we are not less than anybody at all. We are there, or we are getting there. We will get there. In fact, today's chief guest reminds me of the principle that is there with Olympics: faster, higher, stronger, together. I think that pervades ARST College as well. We are getting ahead faster, and we are aiming higher, and we are going to be stronger together. So the Olympian spirit is there, even though it may not be a purely sports ground issue. So I would also take this opportunity to address all the younger students who are there, that they are now living in an era of affluence, not only monetary affluence, information affluence, knowledge affluence. Things are there at fingertips. In our days, you had to visit 10 libraries to find something. Today, it's there, literally at your fingertips. So they should really all look forward to achieving higher, going faster. The world is there up for grabs, and I appeal to all the youngsters: dedicate yourself to your pursuits. Your teachers are there, very competent, very motivated to help you. As far as we alumni are concerned, our consultation, guidance is available to you on demand, whatever you would like. If somebody is interested in a military career, we have retired colonels, even generals, who can give you whatever guidance they want, whether it's civil services. One of our alumni, Dr. Ravindra, is a writer as well as a civil servant, and he actually guides and coaches civil servant aspirants. So for all the students, through the college, you can contact us. We'll be happy to come to the college and meet you, give you any guidance which we can. We want you to go ahead, and when you leave the college, you leave another star that everybody can aspire to. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your kind and motivating words and your good wishes.
I now request Shri Pavan Jaggi sir to enlighten us with his words of wisdom. Good afternoon. It's a pleasure for me to join in and express my feelings to you. I still remember the first day when I came here to the college and I met everybody. I could feel the staff was so promising here. Because of the staff only, I had a feeling that this college could have come up. Really had a feeling. There were so many people who were motivated. 90% of the staff were so motivated. I could really feel that they are going to change this college, into one of the best colleges in the country. And I remember I said a small thing, that time, a small share. हमने एक क्षमा आंधी में जलाए रखी है, लोगों ने शब्द हवाओं से लगा रखी है. And I just changed it again. I said, हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है. वैसे उन्होंने एक क्षमा आंधी में जलाए रखी है, लोगों ने शब्द हवाओं से लगा रखी है. And उनकी कृपा से, with the grace of the mighty, almighty, this college, progressed leaps and bounds. It is very unexpected for any college to do so well. And I used to say that our college, ASSG, is better than Shriram College of Commerce. I used to say that. I passed out from SRCC, but a kind of mix, the activities what we had here, they were so great. A principal, a dedicated person. We were lucky to have him to get to be the principal of this college. He is the person who changed this college. And with the help of all of you. Today, Mr. Sandhu, will be thankful to him that he told us, that what kind of role the sports have to play. We should promise today and pledge that we should, for next Olympics, from ASG College, we should have somebody to play for the country in any sport. We should try and pledge, and we should try to build up our facilities in such a way that we should be in such a limelight. As we have actors and other people who are civil servants, in all parts of the society. We should have sportsmen who are outstanding. We should pledge today, and I feel that ASG College में कुछ भी तुम सोचते हो, उसको ईश्वर पूरा करते हैं. हमेशा this is what has happened because of the dedication of everybody. In this COVID time also, I've seen you people working so hard, as if the college is open. Everybody is working. Look at the way you conduct your programs, you conduct yourself. It is so overwhelming to see the kind of motivation and the kind of dedication you people have. I'm really thankful to you. Our alumni with Mr. leading person, Mr. Arya, he's always so dedicated. He's just trying to help the students. किसी कॉलेज में ऐसा होता नहीं है. एलुमनाई बोलता है सबको कि भाई हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, we are there to help you out. I will come to the college for you. इतनी dedication है, the kind of commitment you people have. It gives me so much pleasure. Founders को, उनकी आत्माओं को कितनी खुशी मिलती होगी to see, the way the college has come up. The college was not in a good shape, when we had joined in 2013 and all. But now, if you look at the college, the building, the infrastructure, again, जहाँ साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली है, the soul of the college is very important. यहाँ के लोग जो है, उनकी commitment इतनी ज़्यादा है, खुशी होती है देखकर. वो प्रिंसिपल का तो हमारे मुकाबला है ही नहीं. मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो हमेशा लगे रहते हैं इतनी मुश्किलों में, इतनी बीमारी के अंदर भी वो डेली कॉलेज में होते हैं. वो सब आप लोगों के लिए तो है, आपकी सेवा के लिए है. और हम लोग भी ये समझते हैं कि ये कोई अवसर सेवा का मिले तो हम हमेशा आपके साथ ही हैं. मैं तो प्रिंसिपल साहब के बारे में बोलता था, एक दिन मैंने बोला भी था, एक शेर भी बताया था मैंने. वो हर बात भी कहते हैं और दिल भी दुखे ना. लहजे का करिश्मा है या आवाज का जादू, वो हर बात भी कहते हैं और दिल भी दुखे ना. ऐसे हमारे प्रिंसिपल हैं, सब कुछ सबको कह देते हैं, किसी का दिल भी दुखता नहीं है. He gets his message across. So I would request and urge everybody, all of you, to please support the principal because उनकी dedication as a principal किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज का है ही नहीं. मतलब one of the best principals we have in the country. So हमारी ड्यूटी बनती है, everybody should support him.
So I urge again and again, please support the principal. जो स्टाफ है आप लोग डेडिकेटेड तो है ही हैं, लेकिन और बहुत ध्यान दीजिएगा, कॉलेज को कभी भी कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। फिर जैसे भावना से ये बना है, आप लोग उस भावना को पूरा करते हैं, बड़ी खुशी होती है देख। So I'll say thanks to everybody now, and I beg your leave. Thank you very much with my joined hands. Thank you very much. Thank you, sir, your presence. Thank you. And also for always inspiring us and motivating us to do better. Thank you very much, sir. I would now like to invite Professor Premlal Unial, Treasurer, College Governing Body, to address us. Sir. Thank you. Thank you, Sinhaji. Very good morning to all wonderful people present today. Respected Chief Guest, Sri Manavjit Sandhu, Sri Pavan Jaggiji, Sri Aryaji, Sri Tokasji. It is really great to have you all together in the college and to remember the college contributors. Really, today it is a wonderful day, and it gives me immense pleasure to be the part of this celebration of Foundation Day of this great college. This is a special day and a day of excitement. Even when the film was running the past and greater stories and journey of the college, I was so excited to see the steps and what were the milestones. It is definitely very inspiring. So it is a special day and a day of excitement when the college gets the opportunity to reflect the significant development of wonderful journeys, milestones, and gems produced by the college, gems prepared in the college, made in the college, refined in the college. It is a really great to remember them. So this is a all since the inception of the college, and it is more importantly to remember the great personalities and contributors of the college development, contributors to the college development. So it is a great day to revisit and reconnect with the continuing journey of the college. We celebrate that we are blessed with such wonderful facilities now. What we have, the great conference hall, great building, modern facilities, teaching rooms, labs, and new courses, add-on courses, all livelihood opportunities, courses related to jobs, and future plans of establishing the interdisciplinary research facilities and instrumentation facilities. I am really excited to see all through my eyes. And in fact, we celebrate the joy of learning and bond that we share with the past and present members of the ARSD College family. I am really and highly impressed with the words presented by Jaggiji to support principal, to support faculty. I think these are the things when we support, the college grow, college develop, and all the hindrance are really go. So finally, we honor our founders as we reflect on the commitments and dedication that displayed to see their vision. We also thank the faculty and the students of their contribution in the development of the college. I really congratulate
to the award winners, which Professor Gyantoshji announced a few names, and it is really appreciable, and we congratulate for their contribution. We rejoice in the love of ARST College that bonds us together. That is why the Foundation Day is so important. It is a celebration of bonding of the families, past and present contributors. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for your polite and encouraging words. May I now invite Dr. Vinita Tuli. Dr. Tuli. Thank you, Ravinder. Now it's time to thank and felicitate some members of the teaching staff that have contributed decades of their lives for the making of this institution as we know it now. It is our privilege to have Dr. K.R. Sethi with us today. Dr. Sethi joined the chemistry department of the college on 16 July 1966 and superannuated in the year 2008. He did his MSc in chemistry in 1966 and PhD in 1984 in polymer chemistry, both from the University of Delhi. He has 14 publications in journals of repute and was also associated with writing chapters in the NCERT. A fine and a conscientious teacher, a man of progressive ideas, compassion for the poor and the downtrodden. I welcome and invite Dr. K.R. Sethi to say a few words of encouragement to us. Thank you, Vinita ji. I really feel honored that when I received the invitation, the Principal Gyantoshji and Dr. Ji to join the college on this mission, I really felt quite emotional because I have had a very long association with the college. Before that, I would welcome all the honorable guests, Mr. Jaggi, the chairman, and Mr. Manavjit Singh Sandhuji, who is chief guest, and Ravinder Singh Stoker, and other honorable guests. I pay my respect to them. And I would like to delve upon the times when I joined the college in 1966. When I visited the college on 16 July 1966 to join it, I think that college was in a very remote place. That was the first time I had, of course, after filing the application, I've come for once. And then when I joined it, I found it is a college in a very remote place, almost like a place it is in a village. There was no activity around the college. The ring road, which is now so busy and so crowded, was a single lane road. That was also broken at many places, and you could hardly find any traffic on that road. And nobody used to travel on that road at night because many murders had taken place on this road. That was the situation. And the college was also in a very good condition. The infrastructure was bare minimum. There were no flush toilets. There was no canteen.
The canteen was somewhere near where we used to have a tennis court near that, and it was just covered with a tarpaulin. And just like a dhaba, it was no proper canteen at that time. And there was a staff room in the 6 rooms. The room number 6, which will be a larger one, it has been partitioned after that. So that used to be the library. And room number 5 used to be the accounts department. Now, room number 4 was a very small room where the NCC room was located. And room number 3 was the office. So practically there were just 2 lecture rooms and 2 these lecture theaters, chemistry attached with the chemistry department and the physics department. And there were very small number of teachers. I was the 21st perhaps when I joined. So that was the situation. And from there on, we have traveled a lot. And I come sometimes and visit the college and find tremendous progress. And that progress, the major credit of that progress has taken place, which is the last few years. That credit goes to our chairman, Jati Saab, and Principal Santosh Jha and other colleagues. Now, of course, I assume there are more than 100 teachers in the college. Now, one good thing which was there at that time, and I think that tradition is still carried on, that was the staff room. The staff room was a very healthy atmosphere. The teachers used to sit and exchange our views over the cup of tea. And to learn, there was a very amicable, friendly relationship between them. There was no animosity of any kind. And from there on, we have traveled a lot. And today, I find college achieving very new heights. And I wish that this journey continues for a long time. And we achieve a very respectable position, not only in the country, but at the international level. So with these words, I thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir, for your words of encouragement. It is our honor and privilege to have with us Shri R.M. Sharma ji. Mr. Sharma joined the chemistry department in the year 1966 and superannuated in the year 2010. A fine gentleman, a contingent and an upright person, and showing a strict regard for what is morally right. Mr. Sharma was a friend, philosopher, and guide to many teachers of the department as well as the college. A philanthropist, Mr. Sharma has donated 4 oxygen concentrators, 1 to the college and 3 to the health center in the Delhi University during the second wave of pandemic, where many of us were facing shortage of it. He is known for his Shero-Shairi as well, and he made the atmosphere of the staff room very lively. I invite Shri Sharma ji to say a few words of encouragement and experiences and share his experiences with us. Ravinder? Ma'am, he has disconnected, I think. He had joined in the beginning. I think now he is not here. So can you go ahead and in between I will call him? Just call. Okay.
We are privileged to have Dr. D.N. Parashar with us today. Dr. Parashar joined the physics department in the year 1966 and has 42 years of teaching experience. A researcher, a diligent teacher who was popular amongst all students. He has published 76 papers in reputed journals in theoretical high energy physics and also guided thesis research of 5 students. Frequent visitor to the International Center for Theoretical Physics, Italy, and also visiting professor at the Max Planck Institute of Mathematics, Germany. Sir, I invite you to share a few thoughts with us. Sir, आप अपने आप को unmute कर लो. Is it okay now? Yes, sir. Okay. I express my greetings to all who are present at this virtual platform. And at the outset, I must acknowledge my deep appreciation and gratitude to the principal, to the Honorable Principal Professor Gyantosh Jha for facilitating this felicitation function in conjunction with the 62nd Founders Day celebrations. I have great admiration for the young, dynamic principal who has really steered the college from abyss to this lofty values where it is recognized the world over, if not in anything else, but academics and infrastructural facilities are stupendous. So I really acknowledge his contribution to the upliftment of the college, and I only assure him that if he needs our help or support in any way, we would be immediately ready to offer. I must contrast this situation, the present situation, with the one that prevailed in the 60s when we joined the college. The college was, the passage to the college, the entry to the college was riddled with hills and valleys and so on. So it was not difficult. It was impossible even to see the full view of the building. And as the time passed by, things started changing, and ours being the physics department of 5 persons only, we had to teach several courses at the same time. So it was a tough time for us. And but later on, we decided that we must shift from BSc General to BSc Honors, which was at that time being taught by the university departments. So we mounted a struggle to achieve that goal. And some of my friends from the chemistry department, Sethi Saab and Radhe Mohan and Lokesh. So we all congregated together along with my own colleagues from the physics department, like Professor Arora and others. So we decided to mount a struggle to get this physics honors and other science honors, for example, chemistry and physics both, to the colleges. Shifting was extremely difficult because of the arrogance of the people in the main university department. They had apprehensions that the college teachers won't be able to teach as well as they would do, but they were proved to be wrong when it was decided that the honors courses will be transferred to the colleges. So this is, and in those days, of course, we were working as a team with minor resources, with very poor salaries and things like that. So Dr. Sethi would bear me out that we were paid only 300 rupees per month. And but that was quite satisfying considering the fact that we all enjoyed teaching and little bit of research at that time. There was hardly any incentive for doing research in those days. Yet some of us prevailed upon the authorities, and Professor C.L. Suri
was a really a gem of a person. He encouraged us to do whatever we deemed fit at that time. So we tried our best to raise standards of this college in whatever way it was possible. And we of course had the support of the administration, just like you all have and we all have the support of this dynamic, youthful, exuberant principal, Professor Jan Jha. So this is how things panned out in those days. And I'm pretty sure that the college will go from this stage to further improve its reputation from the 13th position to the first position in the near future. And all dedicated friends, younger friends are there. So I'm pretty sure that a day is not far when it will be rated as one of the best in the country. So with these words, I must conclude, and I thank Vinita for all these introductory remarks. And one more thing that I must apprise my younger colleagues particularly is that in the days when we joined, the college staff never came in a car because none had a car except Radhemon Sharma. So we used to wait for him and his classes would be over and we would take a ride with him to the central part of Delhi. And as Dr. Sethi mentioned, this was a dilapidated terrain where people really were very apprehensive to send their kids to these remote areas. But anyway, over the period of time, things changed for the better and the college acquired the reputation that it has as of now. So, and I used to stay in Roopnagar, close to the university campus, and we used to take only one bus. There was one bus number 9, which Lokesh and I would take the bus from there. It would take 1.5 hours, and its frequency was 2 hours. So we would wait. So the time was not an issue because we would stay in the college for the entire duration of the day to either meet classes or to meet students and other faculty members. But I must say there was a bonhomie, there was no groupism, nothing of the kind, and we used to all have our meals, particularly the lunches together. We would open up our boxes and eat together, most of us. So it was a great time that we had. Even during the years that followed, uh, we were really very happy with the kind of ambience that developed in the college with the passage of time. We had a physics principal before, and we could interact with him on par. He is also a gentleman, like what we have with Professor Gyan Purush. So I wish him extremely well in the future, and I wish all our young colleagues, Vinita included, to do well in their endeavors to uplift the morale and academic performance of this great institute. Thank you very much indeed. Thank you, sir, for your words of encouragement and sharing your experiences with us. Sir, I forgot to mention your laughter, and the staff room used to reverberate with it. Okay, whenever this pandemic relieves us and there is physical interaction, then one of these days I might drop in, and it is good for me also because at home my wife says that your friends say that you have a very hearty laughter, but in the home you don't have. So I said, if you give me a list of things to do right in the morning, how can anybody have the courage to laugh? So this is how things take shape up at home. But I utilized my time even during the pandemic, helping my wife in the kitchen, cutting vegetables, like that. And I was able to publish 5 research papers during this period of 1.5 years. So that was the net gain during this time. And okay, I'll share my laughter with you when I visit
सर घर की हंसी आपकी स्टाफ रूम में ही निकलती थी और सबके साथ वैसा ही होता है. Thank you, sir. Once I was Thank you, sir. after with other colleagues, long time back, I think, and the principal came and said, "अरे भाई थोड़ा धीरे से जरा." मैंने कहा क्या हुआ? कहते नहीं क्लास चल रही है फलाने कमरे में. वो that was room number 1. We were close to 52. So he said नहीं वहाँ चल रही है. मैंने वहाँ तक थोड़ा जाएगा आवाज. कहते नहीं जाता है, आप थोड़ा धीरे. मैंने हंसना है तो धीरे हो नहीं सकता. तो Thank you, sir. thank you very much for all your adulatory remarks and your kind words and invitation. I hope to see you sometime in the future. Thank you, sir. Thank you, sir. We are honored to have with us Dr. L.K. Sharma. His journey with this institution started in the year 1966 in the Department of Chemistry and retired in the year 2006. An enthusiastic teacher who engaged his students in an interactive environment wherein they learned to successfully put their creativity and acquired knowledge to the real world scenario. With this motto, he has spent a blissful 40 years of teaching in the institution. He did research in chemical kinetics and published many research papers also. We are really honored to have you with us, sir, and invite you to say a few words. Ravinder, is sir there? I think he disconnected. Just checking again. Sorry, ma'am, can't find it. दो लोग हैं लोकेश. Yeah, I'm speaking. Yeah, he is. हाँ, लोकेश sir हैं. Yeah. So I'm speaking. Okay. Yes, sir, we can hear you. Okay. Hello, everyone. I hope you are all doing very well and staying safe given the unprecedented time we are all going through. Just like every cloud has a silver lining, I'm sure that this time shall pass as well. I take immense delight in affiliating myself with the Atmaram Sanatana Dharma College family. This family truly has a very pivotal role in my heart. I would like to extend my cordial wishes to the college on its founder day. Furthermore, I sincerely thank the institution for considering me worthy of this title. This felicitation means it was founded. They're not audible. Thank the faculty, humble and kind recognition. May God bless you all and this college with all the happiness, prosperity, and good health. Thank you. Thank you, sir, for your words of wisdom. We are honored and privileged to have with us Dr. R.C. Rastogi, who joined the Department of Political Science in the year 1966, a product of Karodimal College, Delhi University. He fully devoted to the college, very popular amongst his students, बहुत हंसमुख और रंगीले स्वभाव के व्यक्ति हैं, and having a passion for photography. I invite you, sir, to say a few words of encouragement and experience. Share your experience with us. Sir, please unmute. Hello. Sir, we can hear you. Sure. अनम्यूट कर दिया था मैंने. अब ठीक है? हाँ जी सर. हाँ. सर आपकी फोटो नहीं, वीडियो ऑन नहीं है.
मेरा वीडियो ऑन था, पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया। कोई ठीक बात है नहीं, सर, चलिए। ठीक है सर। आपने आज इनवाइट किया तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस काबिल समझा हमें कि हमें लोग थोड़ा याद करें पुरानी चीजों को। मैं कुछ एक दो बातें 2-3 मिनट में कहना चाहूंगा, और वो ये कि जब मैंने कॉलेज अपॉइंटमेंट हुई तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हम राजेश रस्तोगी जी को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि करोड़ीमल में इनका बड़ा एक्सपीरियंस है हर लाइन में, एक्टिविटीज में, और हमारे कॉलेज नया है तो ये एक्टिविटी शुरू करेंगे। मुझे अच्छा लगा और मैंने करीब 10-12 एसोसिएशन और सोसाइटी कॉलेज में स्टार्ट की जिन्होंने काफ़ी अचीवमेंट की है। जैसे कि डिबेट्स में मैं बताना चाहूँगा कि एक टाइम ऐसा था जब मुझे जिम्मेदारी दी गई डिबेट की, तो नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस में हमारे स्टूडेंट्स कन्वीनर थे स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से। और कॉलेज मैगजीन का जहाँ तक ताल्लुक है, कॉलेज मैगजीन में हमें बहुत से प्राइजेज स्टेट गवर्नमेंट के मिले हैं डेकोरेशन के लिए और एडिटिंग के लिए। करीब 20 साल मैंने कॉलेज की मैगजीन को एडिट किया। अगर आप कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो बेस्ट यही है कि आप कॉलेज की पुरानी मैगजीन्स को देख लें, उसमें फोटोग्राफ्स भी हैं और आर्टिकल्स भी हैं स्टूडेंट्स के। फोटोग्राफी में तो मुझे ही कई दफ़ा फोटोग्राफ्स लेके एक समय ऐसा आया था जब कॉलेज की ग्रुप और फोटोग्राफ्स मुझे ही लेना पड़ता था क्योंकि फोटोग्राफर अवेलेबल नहीं था या टाइम पे नहीं आता था। कई बार मुझे सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रहने का अवसर मिला स्टाफ का, और हम लोगों ने बहुत अच्छी आपस में बातचीत की, डिस्कशंस किए और डिनर्स किए। कई सालों तक मैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहा और स्टाफ काउंसिल का भी। बाकी हम लोगों ने पोइट्री वर्कशॉप भी की, मुशायरा भी किया। एनएसएस के अंदर जो यूनिवर्सिटी मैगजीन निकली थी न्यूज़पेपर, उसकी जिम्मेवारी हमें दी गई, और यूनिवर्सिटी ने जो 24 यूनिवर्सिटीज़ की कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, उसका भी जिम्मेवारी हमारे ही एनएसएस यूनिट को दी गई थी। बस मुझे एक बात का दुख हुआ कि कई लोगों को हम कॉलेज में लाए, जैसे दिनेश ठाकुर हैं और लोग थे, लेकिन एक व्यक्ति को जो मेरे साथ पढ़ते थे और हम लोग ड्रामा साथ करते थे, अमिताभ बच्चन को हम कॉलेज में नहीं ला पाए, बहुत कोशिश करने के बाद भी। वाल मैगजीन में हमने शुरू की जो काफ़ी सालों तक चलती रही, और अब जिस तरह से कॉलेज का डेवलपमेंट हुआ उसको देख के तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही, कि हम लोगों ने काफ़ी ऊंची पर पहुंचे। इसको सस्टेन करना है। मैं अपने यंग फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा जो टीचिंग में आए हैं कि उनका कोई भी जो टैलेंट जो उन्होंने हो उनके अंदर, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, उसको यूज़ करें यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में काम करने का मौका मिला कॉलेज के, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन था, चाहे वो एग्जामिनेशन का था, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज थी, कोई भी चीज़ थी, मुझे जहाँ तक शौक था, मुझे याद है, आई जॉइंड इट। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि आप लोगों ने हमें याद किया, बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि हम लोगों की नॉलेज जरा डिजिटल कम है, इसलिए आप मेरी फोटो नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं। आई एम नॉट दैट स्मार्ट फेलो कि आपको जरूरी हो देखना। और कभी कभी तो ऐसा लगा कि सबसे एक इंसिडेंट कहकर मैं बात को खत्म करूंगा कि हमारा फेयरवेल फंक्शन था पॉलिटिकल साइंस का, तो सबको चिट दी गई कि जो चिट में लिखा है वो आपने करना है। तो एक को बोला, एक लड़की के पास चिट थी, उससे कहा कि आप बताइए आपकी चिट में क्या लिखा है। उसने कहा इसमें लिखा है आपकी जो इच्छा हो बोल दीजिए, आज आखिरी दिन। तो उसने कहा मैं रस्तोगी साहब के साथ डांस करना चाहती हूँ। मैंने कहा भाई मुझे तो डांस नहीं आता है। कि सर आप आइए तो सही, मैं सिखा दूंगी। मैंने प्रिंसिपल साहब की तरफ देखा, उन्होंने कहा जाइए ना, आपको बुला रहे हैं। तो अब हमारे स्टूडेंट्स की क्या क्या इच्छाएं होती है, आई कैंट से। एक स्टूडेंट अमेरिका से आया, कहने लगा सर आप मुझे पहचानते हैं? मैं कहा नहीं। वो कॉलेज से मैगजीन ले आया, बोले आपने मुझे एडिटर अपॉइंट किया था, मैं अमेरिका में हूँ और मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ जिससे कि आप पार्टी कर सके और मेरे दोस्तों को बुला सके। वो पैसा आज भी कॉलेज बैंक में जमा है और मेरे ख्याल में ट्रिपल हो गया होगा। हम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन वो इंडिया आएगा और हम उसके साथ पार्टी करेंगे। बाकी हमारे कोलीग्स के साथ तो हमने बहुत इंजॉय किया। ऑलमोस्ट
मेरा तो असूल था कि चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, कॉमर्स की हो, मैं सबके साथ पिकनिक पर जाया करता था जानबूझकर। मेरे ख्याल से इतना ही कहना काफी होगा। ऑल द बेस्ट कॉलेज को, ताकि आप आगे भी हमारे, जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक हम लोग अचीवमेंट्स को सुनते रहें। थैंक यू। Thank you, sir, for your words. We are privileged to have with us Dr. M.M. Suri. Dr. M.M. Suri received his BA Honours, MA and PhD degrees in economics from the University of Delhi, specializing in fiscal economics. He has published extensively on the Indian fiscal system in recognized national and international journals. Dr. Suri was an economic advisor of the first Delhi State Finance Commission from 1996 to 97. He retired as associate professor in the year 2008. Presently, he is a regular contributor to the digital version of the Times of India on the current economy. He has clarity of thought and a very good expression and was fully committed to teaching. We are really privileged to have you with us, sir, and invite you to say a few words of encouragement to us. Thank you very Sir, आप much. अपने आप को, हाँ, ठीक है, mute. Fine, sir. We can hear. Can you hear me? Well, yes, sir. Yes, sir. I'm audible. Yes, sir. Okay. Yes. My dear friends, happy to participate in this function to mark the college. I'm grateful to Principal's invitation to be a part of today's function. I'm also thankful to Professor Ajit of the Department of History, who contacted me on my phone, this function, and also sent me the video link through which I am interacting with you. The gracious lady has already introduced me to you, but I want to add one line, one sentence just to update you. I joined the college in the year 1966 and retired in the year 2008. So it was a very long journey of 42 years. There are many experiences to recall, many episodes and incidents to share with you, but I don't think it would be possible for me to do so in view of the constraint of time. So that is the early years of the college, or you can say formative years of the college. As you know, this college was located at its present place in the year 1965. I joined in the year 1966. As I have mentioned, that at that time, the level of infrastructural facilities were very low. Or I may say that certain basic amenities were
non-existent. The very basic facility of having a proper toilet, that was also missing. There was I remember there was a makeshift toilet near the boundary wall of the college, this boundary wall with Venkateshwar College. Similarly, there was a wooden structure that was called canteen of the college near the library. And moreover, even the principal of the college had no regular formal office. Principal C.R. Suri at that time functioned from room number 1 on the ground floor near the library. I was myself interviewed in that room when I was selected for a job in the college. So those were the days, difficult days, you can say. But now things have changed. Luckily, fortunately, things have changed. I'm using a very light word. There has been a complete transformation of the college. It is beyond recognition. And for this, I congratulate Principal Jha and his team of advisors, consultants, and all those who are associated with the college directly or indirectly. When I said that in our times, the level of infrastructural facilities were poor, that does not mean that I have any regret for that, or we were unhappy at that time, or we were always grudging at that time. This was not the case, because the lack of infrastructural facilities was more than compensated by the homely atmosphere in the staff room. We were 8 at that time in 1966. We were 8 teachers, and there was perfect understanding, perfect mutual trust among teachers. The junior teachers, they had respect for the senior teachers, and the senior teachers had affection for the junior teachers. And the senior teachers made our stay in the college very comfortable in terms of allocation of work or timetable, etc. And though it was almost a treat for the mind to sit in the company of senior teachers. I would like to mention one name, Professor M. N. Anand of Physics Department. Every word spoken by him was a quotable quote. The staff room was always resounding with laughter, jokes and counter jokes, and literary jokes, not street level jokes. So what I want to emphasize is that are more important than physical facilities. If you have both, that would be ideal, and you must strive for the ideal. So in my this brief speech, I would like the new generation understand the glorious past of ARSD College, and if possible, to draw lessons from that past. So
with this, again, thank you for felicitating me along with my dear colleagues. And I wish you all good luck, good health. With these words, again, thank you for giving me this opportunity to interact with you. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing your experience with us. Today, the college is honoring and facilitating 3 members of the non-teaching staff as well, who joined in the year 1971 and contributed decades of their lives for making this institution. श्री वीके मिश्रा ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने दायित्वों का अच्छी तरह से वहन करते हुए कॉलेज के विकास में अपना योगदान दिया। अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता और उनका शांतिपूर्ण व्यवहार उनके सहयोगियों के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाता था। अब मैं श्री वीके मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ 2 शब्द कहने के लिए। रविंदर, वो हैं? नो सर, अगर नहीं है तो आप पढ़ दो। श्री एस.सी. कृष्णानी का कॉलेज में के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने PA2 प्रिंसिपल रहते हुए हमेशा अपने उत्तरदायित्वों को प्राथमिकता दी। इस रूप में अपना योगदान सराहनीय रहा है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री एस.सी. कृष्णानी जी को 2 शब्द कहने के लिए। His mic is not connected. I think he's having low internet. Okay. मिसेस कमला शर्मा ने अपने लंबे समय तक कॉलेज की सेवा की। अपने सेवा काल के दौरान वे अपने दिए गए कार्यों का वहन करने के लिए जानी जाती रही हैं। कॉलेज आपके द्वारा की गई सेवा का कद्र करता है मैम। अब मैं मिसेस कमला शर्मा को 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। कमलेश शर्मा है, कमला शर्मा है, कमलेश शर्मा। He was here in the beginning, but I think he got disconnected. With this, we come to the end of these felicitations. Now I hand over to my colleague, Dr. Rosie Sinha, for the further program. Thank you, Dr. Vinita Tuli. To mark the 62nd Founders Day, our students have prepared some dances for you. To begin with, we have a classical dance by Ipshita of BSc Maths Honours first year. विलासिनी
Thank you, Ipshita, for that wonderful performance. We have one more dance for you by Rishita Gandhi of first year Maths Honors. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਿਤਾ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ Hello everyone, I'm Rishita Gandhi from Ludhiana, Punjab, and I am from Atmaram Sanatan Dharma College. My discipline is BSc Maths Honors and I am a first year student. Today I'm going to perform the folk dance of my state, that is Bhangra. Thank you, Rishita, for that very spirited performance. और अब मैं आपका परिचय जाने माने हास्य कवि श्री शंभू शिखर जी से करवाने जा रही हूँ। श्री शंभू शिखर जी एक लोकप्रिय और प्रशंसित हास्य कवि हैं। उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो से एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपने आप को स्थापित किया। प्रस्तुति के अपने अनोखे तरीके के कारण उन्हें काफी सराहना मिलती है। वह एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। उन्होंने कला और साहित्य के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय योगदान दिए, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, श्रवण राही काव्य पुरस्कार, साहित्य शिखर सम्मान इत्यादि। श्री शंभू जी ने मोतीलाल महाविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं श्री शंभू शिखर जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो कॉलेज का जो हम 62वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, ये निश्चित तौर से बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बात है
और ये कोरोना पीरियड है, नहीं तो आज बड़ा उत्साह का दिन होता पूरे कॉलेज में। चारों तरफ सजावट होती, बच्चों की बहुत तरह तरह की परफॉर्मेंस होती, और मुझे इसलिए ये सब देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने 2 डांस परफॉर्मेंस देखी बच्चों की। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी अभी कविताएं आप लोगों को सुनाऊंगा, उससे पहले ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में मैं जो कुछ भी हूँ वो दिल्ली विश्वविद्यालय की देन हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हमारे कॉलेजों में इंटर कॉलेज कंपटीशन होते थे, इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते थे, चाहे वो फेस्ट के टाइम पे ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं, चाहे वो हम अपने डिपार्टमेंट में कर रहे होते हैं, उन सब में भाग ले करके मैं निखरा हूँ। जिस समय मैं ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में गया था, मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। मैं बहुत नया था तो बहुत ज्यादा लंबा सफर उसमें नहीं तय कर पाया, लेकिन फिर उसके बाद स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, इन सब प्रतियोगिताओं में भाग ले करके मैंने अपने आप को निखारा है, और उसके लिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। अजीत सर का जब मेरे पास आज के कार्यक्रम का इनविटेशन आया तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मोतीलाल नेहरू कॉलेज और ARSD आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज ये बहुत ही आसपास में ही है। हम लोग साउथ कैंपस का ही हिस्सा है, और जब भी कभी रिंग रोड पे आना होता था तो आपके कॉलेज में तो मतलब बिल्कुल सामने ही था, और उस टाइम पे तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थी। अब तो पता नहीं नए लोग कॉलेज में जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, बच्चे बड़े शरीफ होते थे तब। और अभी उस टाइम पे आपके कॉलेज का एक स्टूडेंट है हिम्मत सिंह नेगी, वो थिएटर करता है, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, कई जगह पे मिलता रहता है, और बहुत अच्छा नाम उसने कमाया है। अभी मुंबई में भी वो कुछ शूट वगैरह करता रहता है। तो वो आपके ही कॉलेज से थे हिम्मत सिंह। तो हम लोग की बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। मैं अक्सर ARSD के कैंटीन में ऐसे ही घूमते फिरते आ जाया करता था। हालांकि कैंटीन हमारी भी बहुत अच्छी नहीं थी। अब पता नहीं अब क्या डेवलपमेंट हुआ होगा। खैर, मैं एक हास्य का कवि हूँ, और आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए जीवन में हंसी का क्या महत्व है, इस पर पहले एक छंद सुनाता हूँ, और फिर उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत कविताएं और सुनाऊंगा। और क्योंकि बस आप लोगों के बीच में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है कि इतने अच्छे सिन्हा मैम को मैं देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही हैं मैम, आप बहुत अच्छा बोलती हैं आप। और मैं क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज के टीचर को मैं जब भी देखता हूं तो बहुत ही अपनापन फील होता है, क्योंकि सभी कॉलेजों से मुझे बहुत प्यार मिला है। मैं आपके कॉलेजों में भी कई बार आपके कॉलेज में भी आया हूं, जब वाद विवाद प्रतियोगिता या स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता हिंदी विभाग की तरफ से आयोजित किए जाते थे। एक अच्छा पुरस्कार राशि उस टाइम पे 500, 700, 1000 रुपए हम लोगों के लिए एक बड़ी राशि होती थी, तो आते थे। और बहुत मतलब मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ आप लोगों से। भले ही मैं वर्चुअली जुड़ा हूँ, लेकिन खुशी तो दुगनी है, उत्साह बहुत ज्यादा है। तो सभी को, जितने भी यहाँ पे डॉक्टर यूनियाल सर हैं, सर नमस्ते, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके। अजीत सर भी है, और कई सारे टीचर्स जो बहुत पुराने हैं, मैं वो लोग है यहाँ पे, उनको देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। खैर, जीवन में हंसी का क्या महत्व है, ये मैं अपने सारे DU के स्टूडेंट्स, टीचर सबको बताना चाहता हूँ कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सूनी सूनी है। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में कवि सम्मेलन का इतिहास बहुत ही पुराना है। पिछले 3-4 सालों से मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे पहले जो है अक्सर ही आपके एनुअल डे या एनुअल फेस्ट के मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन होता था, और देश भर के सभी नामी गिरामी कवि जो है उसमें आकर के काव्य पाठ करते थे। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह सब जब ठीक होता है तो निश्चित तौर से मैं एक बार आप सबसे, खासकर अध्यापकों से आशीर्वाद लेने के लिए मैं आऊंगा और सबसे मिलूंगा। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, वो अपने अध्यापकों के बहुत ही छोटे रहते हैं, और उनका आशीर्वाद ही उनके साथ काम करता है। आपकी अपनी मेहनत, आपकी लगन, आपके विशेष, आपके लक, ये सब कुछ के अपने रोल होते हैं, लेकिन अध्यापक का आशीर्वाद जो है वो इन सबसे ऊपर होता है, गुरु का आशीर्वाद।
यह सब हम लोगों के लिए काम करता है। तो मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं जो यहाँ पर हैं, क्योंकि मैं खुद DU से पढ़ा हूं, तो डजंट मैटर कि मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज में इनरोल था या आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में इनरोल था, सभी लोग एक ही हैं, सभी लोग एक ही जगह पे मिलते थे कि मित्र मिले हम चार एक, बोला सुनी यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है, मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है, मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। और आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना, रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे मंजिलों को देख देख लगातार हंसना, अपने पर आए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना, बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, 1,00,000 दुख दबा एक बार हंसना, बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे। और एक विशेष मैं जो आपको सुनाना चाहता हूं उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाल रोशनी पे जाल, मोटा माल डरते रहे झूठे मूठे वायदों की मीठी मीठी गोलियों से, जनता के धन से तिजोरी भरते रहे, एक और इनके गोदामों में अनाज भरे, दूजी और भूखे प्यासे लोग मरते रहे, खुद के विकास को ही देश का विकास मान, नेतागण अपना विकास करते रहे, खुद के विकास को ही देश का विकास मान, नेतागण अपना विकास करते रहे। और एक मुक्तक विशेष, एक छंद और सुनिए, फिर कुछ चुनिंदा मुक्तक आप लोगों को सुनाऊंगा। समय का आप लोगों की सीमाएं मर्यादाएं हैं, क्योंकि जब लाइव परफॉर्मेंस होती है तो उसमें तो बहुत सब कुछ रहता है, हम जगह जगह पे अपने कार्यक्रम कर रहे होते हैं, कहीं डांस चल रहा होता है, कहीं ड्रामा चल रहा होता है। आप ARSD कॉलेज का इतना बड़ा ग्राउंड, उसमें एक कोने पे कभी ड्रामा चल रहा होता था, स्टेज पे डांस चल रहा है, हमारे LT रूम में सिंगिंग कंपटीशन या डिबेट कंपटीशन चल रहा है, तो एक साथ कई सारे कंपटीशन होते थे। लेकिन यहाँ तो हमें सब चीज को एक एक करके ही निपटाना है, एक एक उसको क्रियान्वयन में लाना है और उसको एक उचित सम्मान सबको मिले, ये भी बहुत जरूरी है। तो मैं एक छंद और सुनिए आप विशेष कि सत्ता के नशे में चूर मगरूर थे हुजूर, दूर 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 तक बाग देखते रहे, सत्ता के नशे में चूर मगरूर थे हुजूर, दूर 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 तक बाग देखते रहे, चांदी के परिंदों के जो पंख ही उड़ाते रहे, आप उन परिंदों के दिमाग देखते रहे, बेतु के सवाल यूं ही हवा में उछाल, आप सभ्यता के बुझते चराग देखते रहे, खुद के गरेबा में तो झांक के न देखा कभी, दूसरों के दामन में दाग देखते रहे, खुद के गरेबा में तो झांक के न देखा कभी, दूसरों के दामन में दाग देखते रहे। और मैं 4 मुक्तक आपको और सुनाता हूं और फिर इस कार्यक्रम को जैसा आप लोग चाहेंगे उसी तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मुक्तक है मेरा। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं दिल्ली के CP में रहता हूं। CP यानी छतरपुर। वो एक लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने गया तो फॉर्म भर के आ रहा था, पीछे से क्लर्क दौड़ता हुआ आया। आजकल तो हम ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, पहले एक एक कॉलेज में जाकर के वर्चुअली फॉर्म भरा जाता था, सब जो जाते थे एक एक मैनुअली फॉर्म भरते थे, और उस टाइम पे पूरे कॉलेज का हम लोग जायजा ले लेते थे कि कौन से कॉलेज की कैंटीन कैसी है, ग्राउंड कैसा है, कॉलेज का बिल्डिंग कैसी है, सब कुछ एक एक कॉलेज में जाना, ये भी एक तरह का एक बहुत बड़ी जर्नी होती थी, एक बहुत इंटरटेनिंग होता था। और वो अब तो एक सेंट्रल फॉर्म, अब तो वो भी ऑनलाइन हो गया अब तो पूरी तरह से, कि आप एक फॉर्म भरिए और इसी में सारे ऑप्शन हो गए हैं। इजी बहुत हो गया है लेकिन रोमांस खत्म हो गया है, मतलब बहुत सारी चीजें मैं ठीक कह रहा हूँ ना सिन्हा मैम, बिल्कुल इजी तो बहुत हो गया है लेकिन एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। मतलब जीवन में आप सोचिए ना, जिस बच्चे का ARSD कॉलेज में एडमिशन हो गया, अगर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं है तो वो कभी भी हंसराज कॉलेज नहीं देख पाएगा, वो कभी भी बाकी कॉलेज जो है वो नहीं देख पाएगा। और हम लोग तो इतने बदमाश थे कि बैंड का फॉर्म भरने जा रहे इस नाम पे लेडी श्रीराम कॉलेज में भी घुस जाते थे
कि वहां भी भर के आएंगे। तो ये भी एक कॉलेज का लाइफ रहता है। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं 12th के बाद, तो ये सब चीजें करने लगते हैं। खैर सुनिएगा, तो एक आदमी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लड़का फॉर्म भरने आया, फॉर्म भर रहा था, तो क्लर्क बाद में पीछे से दौड़ता हुआ आया, बोला बेटा आपने फॉर्म गलत भर दिया। तो लड़के ने पूछा जी क्या गलती कर दी? तो क्लर्क बोला बेटा जहां पे नाम भरना था तुमने पता भर दिया, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला जी विकास पुरी, जैसे ओमपुरी अमरीश पुरी, नाम है पता थोड़ी है। बोले अच्छा पिताजी का क्या नाम है? बोला जी जनकपुरी। माता का क्या नाम है? बोला जी मायापुरी। घर में और भी कोई है जी? छोटा भाई चाणक्यपुरी। साथ में कोई आया है जी? बड़ा भाई कल्याणपुरी। तो क्लर्क ने हाथ ही जोड़ लिया, बोले बेटा आपका एडमिशन तो जहांगीरपुरी में ही हो सकता है। तो दिल्ली का भी अपना मजा है। लेकिन आप सुनिएगा साहब, ये तार मुक्तक विशेष सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद भी आएगा। कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं। एक विशेष सुनाता हूं, आप सबको याद होगा, आप सबको तो पता ही होगा। एक बार ऐसा हुआ था बीच में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएशन थी वो 4 साल के लिए हो गई थी। अभी पता नहीं फिर से वो रिवाइज कर दिया था उस फैसले को, और फिर से अभी वो क्या है मुझे नहीं पता। सेमेस्टर सिस्टम हो गया, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, आप एक बार एग्जाम देते थे उसी में ही आपके वारे न्यारे हो जाते थे। तो जब 4 साल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को ग्रेजुएशन कर दिया, तो मैंने एक मुक्तक लिखा, और सुनिएगा आप सबको मजा आएगा। इसका फर्क क्या पड़ेगा 4 साल के लिए जब हो गया, इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर मैंने एक मुक्तक लिखा था, और बहुत लोग सुनते थे, बहुत इसको पसंद करते थे। क्या होगा इसका 4 साल का डीयू का अगर होगा? कि कम सिन सिकली भोर की कुंभलासी जाएगी, कम सिन सिकली भोर की कुंभलासी जाएगी, होगी जो गुल बदन सी वो मुरझासी जाएगी, आएगी पहले साल जो खिलता हुआ कमल, यारो वो 4 साल में बुढ़िया सी जाएगी, यारो वो 4 साल में बुढ़िया सी जाएगी, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हूं। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा कर, मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। अंग्रेजी का अध्यापक आ गया, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा कर। गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गणित के अध्यापक फिर आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जमा करके फिर, अच्छा आप लोगों को लव मैरिज और अरेंज मैरिज में पता है?
सब मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है। अरेंज मैरिज में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। तो आप लोगों ने बहुत समय दिया, एक 4 मुक्तक अंतिम सुना करके, और फिर आज के इस प्रोग्राम को मैं अपनी तरफ से खत्म करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अजीत सर को कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मेरी पुरानी यादें ताजा कर दी। अगर ये सब कुछ और सामने फेस टू फेस हम सुन रहे होते तो मैं भी कम से कम 1.5-2 घंटे तक तो आपको सुनाता ही, 1.5-2 घंटे तक तो मैं आपके प्राण पीता, लेकिन अभी तो 1.5-2 घंटे में हो सकता है हमें सारा प्रोग्राम ही खत्म करना पड़ रहा हो। तो मैं आपको जो है वो सुनाता हूं एक, आप इसका आनंद लीजिए कि जीवन में क्या है। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं। तो खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आत्माराम सनातन धर्म ARSD कॉलेज के 62वां स्थापना दिवस है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो और हम एक दूसरे से फेस टू फेस मिल सकें। आभार, धन्यवाद, जय हिंद। मैं श्री इस तनाव भरी जिंदगी में कुछ पल मौज भरे और मस्ती भरे माहौल में बिताकर हमें एक नई ऊर्जा सी मिल गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। We now present before you some testimonials by our teaching and non-teaching staff members as well as some members of the alumni. कॉलेज के स्थापना दिवस पर अपने मनोद्गार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी करके मेरी जीवन यात्रा 1977 में आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से प्रारंभ हुई, जिसके साथ मैं 40 साल जुड़ा रहा। एक अच्छे वातावरण में सुयोग्य सहकर्मियों के साथ पठन पाठन का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे व्यक्तित्व के विकास में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे कॉलेज की प्रतिष्ठा प्रारंभिक वर्षों में काफी अच्छी थी। फिर कब और कैसे दक्षिण परिसर के एक प्रतिष्ठित सहशैक्षणिक संस्थान के रूप में हमारा कॉलेज पिछड़ने लगा, पता नहीं। मेरा मानना है कि व्यक्ति की तरह संस्थाओं की भी जन्म कुंडली होती है। निरंतर नीचे खिसकने के बाद हमारे भी अच्छे दिन आए। 22 जुलाई 2011 को मैं कॉलेज के लिए एक मील का पत्थर मानता हूँ। नए सत्र का पहला दिन, चारों तरफ सरगर्मी थी। ग्रीष्मावकाश के बाद हम अपने सहयोगी साथियों से मिल रहे थे, तभी अचानक एक सनसनीपूर्ण खबर आई कि विश्वविद्यालय की कुलपति कॉलेज के दौरे पर हैं। कॉलेज के गलियारे में घूम घूम कर वे नए बच्चों से बात कर रहे थे और उनकी परेशानियों का जायजा ले रहे थे। हम सब भौचक्के थे। एक वह दिन था और एक आज का दिन। गत 10 सालों में लगता है सब कुछ बदल गया। कॉलेज प्रोफेसर दिनेश सिंह के रडार पर आ गया। सनातन धर्म कॉलेज का भाग्य बदलने लगा और हम नई बुलंदियों को हासिल करते चले गए। हम आज जहां खड़े हैं उसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। यह एक सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। सारे स्टेक होल्डर्स के प्रयास से हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः कायम हो सकी है। न केवल विश्वविद्यालय में बल्कि पूरे देश में हमारा परचम लहरा रहा है। आज वह व्यक्ति जिसने एक मासूम बच्ची को जुलाई 2011 में जो आश्वासन दिया था, उसे पूरा होता हुआ देखकर
बहुत खुश होगा। मार्गदर्शन, सहयोग और कॉलेज में के उत्थान में आपकी दिलचस्पी के लिए हम आपके सतत आभारी रहेंगे प्रोफेसर सिंह। संस्थाएं ऐसे ही नहीं बनती हैं। विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक, अलुमनाय, अभिभावक सबका निरंतर योगदान चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज मैं जहाँ हूँ, जिस हालत में हूँ, उसमें मेरी जन्मभूमि और माता पिता के अतिरिक्त सबसे बड़ा योगदान मेरे कॉलेज का है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है। मैं सदा इसका ऋणी रहूँगा। आज स्थापना दिवस के पावन अवसर पर आप सबको मेरी बधाई और शुभकामनाएं। सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार धवन आप सभी को कॉलेज का जो 62वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उसके लिए दिल से शुभकामनाएं देता हूं। मैंने कॉलेज को 16 जुलाई 1969 में ज्वाइन किया था और मैं कोई 43.5 साल की सर्विस के बाद 31 जनवरी 2013 को रिटायर हुआ था। इस 43 साल में बहुत कुछ शुरू में हमें मिलती थी। कॉलेज BSc जनरल क्लासेस ज़्यादा हुआ करती थी साइंस में, और शुरू में जहाँ तक कॉलेज का लोकेशन है, कॉलेज में पहुँचना, बस रूट और दूसरे जो हैं वो भी इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। और शुरू में तो हमारे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज को वेंकी के वेंकटेश्वरा कॉलेज के बराबर वाला कॉलेज कहा जाता था। बड़ा अफसोस लगता था कि हमारे बच्चे और हम कुलीग सब मिलकर मेहनत से सबको फ़ायदा मिले। अब जहाँ तक ये बात है कि शुरू में तो कॉलेज की जो प्रोग्रेस है धीरे धीरे हुई, लेकिन मेरे रिटायरमेंट के बाद शायद ऐसा ही लिखा था होना, जब प्रोफेसर ज्ञानतोष जी प्रिंसिपल बने तो कॉलेज ने एकदम दिन दुगनी और दिन दूनी और चौगुनी तरक्की की, काफ़ी तरक्की की, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मुख्य रूप से जग्गी साहब का भी जिक्र करना चाहूँगा, जो गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन रहे और आत्माराम सनातन धर्म सभा के रिप्रेजेंटेटिव थे। उनसे भी बहुत प्यार मिला, बहुत मान सम्मान मिला, और ये बात की जो भी कॉलेज ने किया आगे और बड़ी तरक्की करे। और इन शब्दों के साथ मैं सबको फिर से बधाई देता हूँ और ये कामना करता हूँ दिल से कि हमारा कॉलेज दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। धन्यवाद। आज हमारे कॉलेज आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज अपनी 62वीं फाउंडर्स डे मना रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। बातें करने की तो बहुत हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं 1967 में जब यहाँ पे आया था तो उस समय और आज के समय में बहुत ही अंतर है। उस समय प्रॉब्लम कन्वेंस की भी थी, आने जाने का रास्ता नहीं था, बिल्डिंग भी 6 कमरे थे, इधर कुछ बनने में लगी थी, और हमारे स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की। हमारे पहले की वजह से आज बहुत ही सुंदर पार्क है, आपके फील्ड्स हैं, लेबॉर्ट्रीज हैं अलग अलग की, और अब तो मेरे ख्याल रिसर्च के लिए भी यूजीसी ने पैसा दिया है, और ये काफ़ी तरक्की और भी करेगा। इसके बाद हमारे कल्चरल सोसाइटी में झा जी ने, तनेजा जी ने काफ़ी योगदान दिया, और हमारे बच्चों ने, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी गए काफ़ी हमारे बच्चे। तो कल्चरल ड्रामेटिक सोसाइटी में हमारे साल में 3-4 दिन फंक्शन हुआ करते थे, जो कि विश्वविद्यालय में कहीं भी नहीं हुआ करते।
तो इससे देखकर मन काफ़ी प्रसन्न हुआ। किसी ज़माने में था हम सोचते थे हमारे कॉलेज का नाम नहीं आता, सबका नाम आता है, लेकिन आज जब पेपर में पढ़ते हैं तो बहुत उनसे आगे निकले हुए नज़र आते हैं हमारा कॉलेज। और ये सब हमारी कॉलेज के छात्र, स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, प्रिंसिपल साहब, और इन्होंने हमें काफ़ी प्यार दिया और जिसकी वजह से ये कॉलेज इतनी तरक्की कर सका। मैं आज 62वीं फाउंडर्स डे पे आपको एक बार फिर बधाई देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लगाता हूँ। जय हिंद। Hello everyone. I am very happy to note that the college is celebrating its 62nd Founders Day in a few days from now. I must say that days like these mark the journey of an institution from the day of its inception. And I must also add that since the time I joined this college in 2013, I think I have witnessed tremendous growth in the college in terms of academics, in terms of infrastructure, in terms of extracurricular activities under the great leadership of Dr. Gyantosh Kumar Jha, the Honorable Principal of the college. I have been a very lucky student being a part of ARSD College because I got the ecosystem to work on my skills and to develop my personality into something that can be put to some good use for the society. And I think this is what a student looks for in an institution when he joins an institution, particularly, after school. It's very important that the faculty members, the students, the leader of the institution, Honorable Principal Sir, and the entire ecosystem is supportive of student activities. The entire ecosystem wants to hone the skills of students and wants to make them into great personalities no matter what they do in future. I think ARSD College has developed this ecosystem in the institution in a wonderful manner, and I am more than certain that the institution is going to achieve great heights in the years to come, as it has been achieving in the past few years. Every year I see that the college comes in the list of top 10 or top 15 colleges in the country, and it is not a small feat for an institution in such a competitive environment. I wish all the best to the faculty members, to Honorable Principal Sir, to the present students, respected alumni members, and also the future students who are about to join the institution for the upcoming Founders Day. And I hope that the college continues to grow, and in whichever capacity the college requires our assistance of all the alumni members, I think we all must be ready and willing to do anything for the institution. And in fact, it would be an honor for us to assist our institution, something we call family, something that has laid the foundation stone for my career, to support it in whichever manner possible. Thank you so much. Good morning to all on this auspicious day. As we celebrate ARSD's 62nd Founders Day, I, Chitralekha Nair, batch of 2021, would like to take this opportunity to talk about my experience at this esteemed institution. My experience at ARSD is a bit different from others. My introduction to the college was not in my first but second year of studies. I had migrated from my previous college as I was in search of a different kind of educational atmosphere, and I found exactly what I had been looking for at ARSD. I was worried about being the new kid, but the history department welcomed me wholeheartedly into their family. It was in our department room that I forged some of my closest friendships. The first few months went by like a breeze, and it was time for the history department seminar. Having missed it in the first year, I had no idea what a mammoth event it was. But the excitement in the department room was infectious, and I soon joined the bandwagon. From writing invitations to designing flyers to manning the registration desk, we did it all, provided that the chai and bread pakoras kept coming. It was this kind of all-inclusive work that has prepared me for my career. Now that I'm a gallery associate at the CSMVS Museum at Mumbai and I'm faced with a range of tasks every day, I'm definitely grateful to have learned the value of hard work early on. It was also at the seminar that I was given the opportunity to go up on stage to anchor a few sessions. I was able to hone my speaking skills, and as a result, my confidence in myself and in my abilities increased exponentially.
But more important than cultivating these skills was ARST's and its teachers' contribution in cultivating my mind. It was through my study of history at ARST that I realized my interest in history of art. It was refreshing to see that our teachers gave equal attention to topics on art and culture as they did to, say, economic history or social history. It was because of their brilliant instruction and delivery of lectures that I was able to deepen my understanding of such a niche topic. Once I communicated my interest in the subject, my teachers even sent me specific articles and supported me wholeheartedly in my pursuit to study abroad, acquiescing to my multiple bothersome requests for recommendation letters. I was applying to the world's highest ranked university for history of art, and naturally I doubted myself multiple times. But my teachers' constant encouragement helped me through the process. I'm happy to say that I got offers from both the universities I had applied to, University of St. Andrews in Scotland and School of Oriental and African Studies in London. These achievements would never have been possible without my teachers' constant support, and I thank them from the bottom of my heart. As the pandemic hit, I only really got 1 year to physically experience college. But I know that the impression it left on me and the memorable connections I made at ARST will last a lifetime. Thank you, Ms. Baljeet, for that beautiful video clip. And now I invite Dr. Ajit Kumar, convener, Founders Day Committee, to propose a vote of thanks. Thank you, Roji. So first, I would like to thank our chief guest, Mr. Manavjit Singh Sandhu, who readily agreed and he stood by what he said. And to the treasurer, Professor Premlal Unial, sir, to the former chairman, Mr. Pavan Jaggi, sir, who is always encouraging for all of us, all the superannuated colleagues who joined in and who also readily accepted my invitation on a very short notice and sent their details very readily. And then all the non-teaching staff members also, though they were saying that technically they are not sound and will be unable to join, but initially they were there. So I would like to thank them also. The alumni president and vice president who readily agreed to be part of this celebration. Then I would like my sincere gratitude and thanks to our hard taskmaster and academic leader, Professor Gyantosh Kumar Jha. On 15th, he constituted this committee and he told us to work, and he was very keen to what are the progress going on. And so I would like to thank from bottom of my heart that he is a tough taskmaster, and we should agree. All the students participants who in this corona pandemic, they sent videos in spite of that in order to show. And I would also like to thank all the conveners, cultural, dramatics and other conveners who were in touch with all these students in this pandemic period, and they have tried to take some videos from them. Then all my team members, Dr. Roji Sinha, Vinita Tuli, Anju Bajaj, Anupriya, Baljeet, Ravinder Pant for all technical and other supports, Vikas, Ram Sarup Maharia, Dipankar, Sridharam. So I would like to extend my thanks to all my team members, because it is a teamwork. I can't do anything alone. So these are the team members who always help me in all the circumstances. And then I also want to thank the Secretary, Alumni Association, Rajnikant, who is otherwise also very much helpful. So with this, I want to thank all the present students, employees, non-teaching staff, teaching staff for being here in celebrating 62nd Founders Day. So thank you very much. Signing off with a poem by
Professor Gyantosh Kumar Jha. Ravinder. आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा के पथ पर बढ़ते जाएं, जीवन पथ के संघर्ष समर में संकल्पबद्ध हो बढ़ते जाना, लक्ष्य भेद कर मंजिल पारो, तब तक कहीं ठहर ना जाना, छोड़ अहम को तोड़ वहम को, भय भ्रम के अंध तिमिर को, ज्ञान के आलोकित पथ पर चिरकाल ही बढ़ते जाना। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा के पथ पर बढ़ते जाएं, अज्ञानता अवधेय का घेरा संकल्प अगर कमजोर करें, गुरु की सीख याद करो, गहन ज्ञान से अंधभेद, विघ्न बाधाएं होती राह में, तो मन अपना मजबूत करो, दूर कहाँ अब मंजिल देगी, बस थोड़ी कोशिश और करो। आओ शिक्षा के पथ पर बढ़ते जाएं, ज्ञान के प्रकाश से वो आलोकित नवसृजन संग चल देगा, जीवन के इस पुण्य पथ पर चिंतन में नवोन्मेष भर देगा। आओ कदम बढ़ाएं, शिक्षा के पथ पर बढ़ते जाएं, आओ कदम बढ़ाएं, शिक्षा के